is event in JavaScript. How we can use event to provide that smooth interaction with your interface to your customer. How it will going to help to interact with your application. So that is a particular main agenda of our today's discussion. So here, when the page loads, for example, a simple example for the event is that when the page gets loaded. So that is also an example of one simple event. Okay, when the user clicks a button, okay, that is also an event. That click to is an also event. Other examples include event like pressing any key, closing a window, resizing a window, etc. In fact, when you are clicking your button, right button, okay, not releasing. So clicking is one event and button releasing is also another event. Are you getting my point? Yes. Simple button click and release, one event. Again, what I am telling you, simple pressing button. Okay, I am pressing my button. So that is also one event. And when I am releasing button, that is also my another event. So these are very simple examples. So we can program to execute a particular script based on these events. Okay, let us try to execute this code. Then you will get better idea what I am talking about and how these events actually will work for your interface. So save as कैसे करना है script को? Save as all files. Okay, and here I am giving name event say one. Extension should be yes. Extension should be HTML. Remember always. Only in case of external JavaScript file, you have to provide extension .js. Is it clear? So I am going to save this file. So what is there in this? Is it visible to all of you? Yes. Is there any lag between whatever I have discussing and whatever you are getting on your screen? Lag है क्या उसमें? Delay हो रहा है कुछ? Okay. So here, this is your script tag present in head section. What we have done here? We have prepared one function. Function name is say hello. And what we have done within the function, we have used this alert method. So alert method will display this message on alert window. Okay, so that we will see. So this method is what for calling this alert method, and we are passing this information as an alert message to that alert window. So alert window will get open because of this particular inbuilt method. This method we have kept in or called it within. This is our user defined method. Is it clear? Yes. Please follow my mouse pointer. Don't use cell phones. Then here comes the body section. In this body section, we have displayed some messages, and then we have used one form. And in this form, what I have used? Input type button. और यहाँ पर हमारे पास हमने लिखा हुआ है on click. What is on click equals to? This is what is this? What is on click? One attribute equals to value we are passing. Which value we are passing to this attribute? Yes, say hello. What is say hello? What is say hello? Method function that we have implemented here in this head section. Okay, within the script, within the script tag, right? So what operation will happen when I will click on this button? Click on, so on click. Which event I am using here? On click event. So on click पे क्या होना चाहिए? I want to call this method. And value is what? To display this value as it is. Okay. So let us try to execute it. Then you will actually see how it will work for your case.
So we have to open it in browser. Here it is. So this information is coming through paragraph tag. Okay. So this is what the paragraph tag is saying. Click the following button and see the result. Simple message I have given here. Now, when I am clicking on it, this window is opening, or this page is opening on my web page. This is alert dialog box called. Okay. तो ये जो पूरा फ्रेम, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, it is because of this alert method. It is a task of this alert method. और इसमें हमने मैसेज पास किया था hello world. So that message is appearing over here. Is it clear? और मैंने यहाँ पर जब ओके करता हूँ तो it will disappear. Okay. So what I have done? Say hello. So this title is coming through. ये say hello title कहाँ से मिला हमें? Yes. So it is because of this value. हमने value में जो assign किया है text, that will appear as a title for the button. Are you getting this? अगर आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको सारी इवेंट्स आसानी से समझ में आ सकते. वेरी सिंपल. तो इनपुट टाइप हमने यहाँ पर यूज किया है बटन. तो ये तो फॉर्मेट है हमारे फॉर्म टैग का, अगर बटन टैब हमें यूज करना है तो. ओके. एंड वी हैव यूज्ड दिस ऑन क्लिक इवेंट. सो दिस इज कॉल्ड ऑन क्लिक इवेंट. ऑन क्लिक इक्वल्स टू व्हाट शुड हैपन, व्हाट इवेंट शुड हैपन. ओके. ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए? उस मेथड को कॉल जाना चाहिए. इन माय केस माय इवेंट इज व्हाट, इस मेथड को कॉल जाना चाहिए. एंड व्हाटएवर द ऑपरेशन दैट वी हैव प्रिपेयर्ड within this particular method will get executed. And what we have done here, we have called this alert method and we wanted to display this particular message as an alert to the customer. Okay, let us do it again. When I am clicking on it, what is happening? This window is appearing, this subpage is opening, and it is giving me this information, hello world. So important point over here is when it will open, or when that dialog box or that alert message is coming, when I am moving my mouse pointer here and when I am clicking on the button, when my mouse point through my mouse, when I am clicking this right button, right or left button. Okay. So click. जैसे ही मैंने क्लिक किया, what is happening here inside my program? This method is, we are actually calling this method on click. जब मैंने क्लिक किया तो इस मेथड को कॉल गया, इस मेथड को कॉल गया. So this method is present here, and this method is indirectly within this body, it is calling another method. That method is alert, and because of that this dialog box is opening. Is it clear? Okay. Next, on submit event. Okay, submit, another event is on submit. Let us directly take this code without taking theoretical information. We are directly taking the example so that you can understand very easily. So here again we have this function. Name of my function is my information is available on your screen. Are you also on the screen? Yes. So some information we have provided over here, and again this is present within the script tag, and this script tag is present within head section. Okay. Now within the body we have this form method equals to post. So this we will skip. Okay, in this our example, because we haven't discussed anything about this method or equals to post. So अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है. So we will take this when we will go for this type of discussion. So action equals to t dot cgi on submit equals to return validate. So what is this t dot action? Just a minute. So here it is. Okay. Which method we are discussing? Method is on
submit event. जैसे कुछ हमने submit किया, तो what should happen? So what is happening here in my example? All validation goes here, return either true or false value. So it will display true or false value. So on submit, so this is my event. Event name is on submit. What should happen? What should happen? It should return information after execution of, means this method is going to return something. Is it clear? This method is returning some value, certain value. Okay, so that value will appear over here. Is it clear? Yes. So let us try to execute it. Save as event 2.html. So save browser. यहाँ पर क्या चेंज करना होगा हमें? Everything is same. Only have to change the name of the file. So now it is not giving anything because we don't have code for this validation. जब हम लोग form validation discuss करेंगे, then you will actually get, you know, the knowledge or the information about what is happening or when this event is useful for your operation. Are you getting my point? Yes. So this event we will again discuss after you know your that form validation topic. We have still yet not taken that topic because we wanted to discuss some another points like functions. Before this we have completed looping structures, right? So those are required to discuss form validation, and form validation is very important. So there we will discuss about. Then that time you will come to know what is this method, what is this post, and this action required. Okay, so we will discuss that time. But for now, you can design this way, this particular event on submit equals to whatever the operation you want to build. So that operation you have to mention. जैसे मैंने यहाँ पर अभी validate method को call करना and it is we are expecting it should return something. So this information यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, return either true or false. So it will going to return which type of value? Which type of value? Sorry, कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पर? I'm giving here na information either true or false. So true or false of which type value? Which one? Huh? Boolean. Boolean kind of value we are expecting from this particular method. Next is mouse over and on mouse out. Okay. So what is this mouse over or on mouse out? Let us see. Event 3.html. तो यहाँ में रखेंगे all files. ये हमने किया सेव. हमें चाहिए what will happen here? Yes, ये हमें चाहिए. This image is not available, so we have to search for this image. हमें उसे डाउनलोड करना होगा. Which one is looking cool? This one? Yes. I save OPOIP. कहाँ सेव हुआ है ये?
आ गया ये डाउनलोड। वाई नहीं वाई। ठीक है। प्रॉपर्टीज मिल रहा है किसका? ये प्रॉपर्टी। हमें क्या चाहिए? हमें ये पाथ चाहिए होगा। यस। क्या करना है यहाँ पर? पाथ रखना होगा। डाउनलोड, डाउनलोड्स में उस इमेज का नाम हमें देना पड़ेगा। इमेज का नाम क्या है? पूरा ही रखेंगे हम। देखते हैं ये चलती है कि नहीं। तो 1 week browser. So here this image is displaying. क्या डिफरेंस पता चल रहा है आपको? Yes. What is happening here? Yes. When I am moving my mouse pointer on the image, okay. So what, which event I have used? On mouse over. Okay. On mouse over. अब मैंने यहाँ पर दूसरा भी इवेंट यूज किया है, ऑन माउस आउट। माउस आउट होगा तो क्या होना चाहिए? माउस ओवर होगा तो क्या होगा? होना चाहिए नाउ माउस इज ओवर ऑन द इमेज। नाउ माउस इज आउट, आउट ऑन, आउट ऑफ द इमेज। सो ये दोनों केस में, केस के लिए है। मैंने इसे ऑन करके छोड़ नहीं दिया है। मैंने माउस अगर मैं हटाता हूँ तो भी उसके लिए मैंने कुछ इवेंट प्लान करके रखा हुआ है। सो व्हाट इज दैट? लुक एट हियर। इमेज ऑन माउस ओवर equals to bi big image this. So what is this big image? So this is the function that we have prepared. क्या function prepared किया हमने? Again it is to which tag? Script tag. जब भी हमने कोई स्क्रिप्ट डिजाइन करनी है तो हमें कौन सा टैग यूज करना होगा? स्क्रिप्ट। नाउ फंक्शन बिग इमेज एक्स, एक्स डॉट स्टाइल डॉट हाइट। तो मैंने यहाँ पर दिया इतना, वट एवर द डिफॉल्ट स्टाइल ऑफ द इमेज, height of the image I have changed to 64 pixel. Width को मैंने चेंज किया अगेन to 64 pixel. Are you getting this? Yes. Okay. Now normal image, मैंने नॉर्मल इमेज का भी साइज फिक्स करके रखा है 32 एंड हियर 32। अगर हम लोग इसे चेंज करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पर साइज दे दिया 100 और अब क्या होगा? यस, व्हाट विल हैपन? बताओ क्या चेंज होगा आउटपुट में? क्या होगा चेंज? अच्छे से देखो क्या चेंज किया मैंने, कहाँ चेंज किया। सेव किया था हमने। क्या हो रहा है? रुका रहेगा।
इनिशियली ये इमेज लोड होगा, फिर मैंने जब एक बार और किया और फिर बाहर निकला तो अब डिपेंड करता है कि तुमने किस तरह से फंक्शन को कॉल किया। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 100 पिक्सल, सो इट इज एक्चुअली नॉर्मल इमेज का जो साइज है उसको ये और इंक्रीज करता है। नॉर्मल इमेज मेथड जो है एक्चुअली इंक्रीजिंग द साइज, जो डिफॉल्ट साइज था उसको मैंने हटाकर 100 कर दिया पिक्सल, 100 by 100। तो माउस ऑन माउस ओवर big image, this whatever the image you are using, for that we wanted to call this particular method, okay, and on mouse out हमने क्या किया है, इस मेथड को कॉल किया नॉर्मल दिस। जब मेरा माउस आउट होगा इमेज से तो दिस ऑपरेशन विल हैपन, और जब मेरा माउस इन होगा इमेज पर देन दिस ऑपरेशन इज हैपनिंग। इज दिस क्लियर? यस, एनी कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ फंक्शन को कॉल जाना है, और फंक्शन को कॉल किस ऑपरेशन के अगेंस्ट जाना है, क्लिक पे जाना है, माउस ओवर पे जाना है, माउस आउट पे जाना है, वही सब कुछ। ओके, सो यू कैन प्लान कि क्लिक पे करना है, ओवर पे करना है, आउट पे करना है, एंड अगेन डिपेंड्स रिक्वायरमेंट कैसी। ओके, द नेचर ऑफ इंटरेक्शन दैट यू आर यूजिंग, द वे ऑफ इंटरेक्शन दैट यू आर प्रोवाइडिंग। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पर 3 ट्रांसमिशन दिख रहे हैं, इनिशियल इमेज, सेकंड जब ओवर किया तब, तो इसका साइज क्या होगा 64, और जब मैं इसे बाहर निकलूंगा तो 100। इज इट क्लियर? कई बार ऐसे हम लोगों को इमेजेस मिलती है जिसपे हम क्लिक करते हैं तो वो जूम होता है, फिर हम क्लिक नहीं, जैसे ओवर किया माउस को तो जूम होता है, फिर हम बाहर निकल गए तो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। सो सिमिलर ऑपरेशंस यू कैन डिजाइन यूजिंग these two events, mouse over and mouse out. Dialog boxes, so these are different dialog boxes, alert dialog box जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया था, then confirmation dialog box and this prompt dialog box. So these are 3 dialog boxes we will discuss in next session. For this particular assignment, this much information is needed that I have seen in your this sixth assignment, right? So now you can complete your this 6th assignment. Okay, any doubt? कुछ पूछना है किसी को? अब थोड़ा प्रैक्टिस करना है ना, और आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, और डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जांपल्स है या कुछ क्विज है ऑनलाइन related to this particular topic, or the topic that we have discussed in regarding this particular subject, or specifically regarding JavaScript. So वो आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना है अपने खुद से, अगर उसमें कुछ दिक्कत है, डाउट है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। ओके।